2.0 और एखन 3.0 सेहो चलि रहले हैं। तऽ स्टार्टिंग जे छै 1.0 और किछ गवर्नमेंट फोर्स लाइक अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में सेहो आईटी टास्क फोर्स में छलथि, दिल्ली गवर्नमेंट का सेहो आईटी एडवाइजरी कमिटी में छलथि हँ। और वन ऑफ द टॉप कंपनी जे इंडिया के छै आईटी में एचसीएल टेक्नोलॉजी, तिनका सेहो टीम में रहत मेनली फाउंडर में। और तो हुनका से डिस्कशन करवाइन कि केना मिथिला जे एक बहुत एमर्जिंग इकोनॉमी भ सकै छै नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, और एक एरिया जे लैक कर रहले हैं, ट्रूली एक्सेप्ट करब ऑनेस्टली, जे आईटी सर्विसेज और आईटी के मामला में बहुत लैक कर रहे। क्या था, इंडिया अपने आप में बहुत आगू है आईटी एक्सपोर्ट के मामला में, और बहुत रेवेन्यू से हो जनरेट भ रहे हैं। वैसे इंडिया और मिथिला इंडिया वर्ल्डो के बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह जे छै ई मिथिला से केना एक्सपोर्ट भ सकै छै, आईटी एक्सपोर्ट भ सकै छै, आईटी सर्विसेज केना एक्सपोर्ट भ सकै छै, तई सब के बारे में जानकारी ले। और एगो इम्पोर्टेंट चीज सेहो डिस्कशन हेतै कि मेनली जे गैप छै एखन, जे मेनली तऽ ई तऽ डिस्कशन हेबे करतै कि केना छै। तऽ जे गैप छै एखन, जे मेनली जे टॉप टायर सिटी छै इंडिया का तई में, और मिथिला के सिटीज में कि केना आईटी सर्विसेज को गैप फिल कैल जेते, तई के बारे में डिस्कशन करब मिस्टर निशीश झा सा। और अरविंद झा जी जे छथि से उनका साथ डिस्कशन करता। सो ओवर टू यू अरविंद जी और निशीश झा जी। वेलकम टू द मिथिला एंजल नेटवर्क फाउंडिंग। थैंक यू अर्पित, थैंक यू सो मच। निशीश जी प्रणाम, आके मिथिला एंजल नेटवर्क के फाउंडर टॉक में बहुत बहुत स्वागत। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ इतने टाइम दिलिए। हाँ, एक टॉप एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव सेहो चलो है, अपन काज सेहो कर रहल छी, तो आई अंडरस्टैंड आके टाइम के की कीमत है, की वैल्यू है। तो आके सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। इक्वली एक्साइटेड। तो सबसे पहले हम कोशिश करबे कि यहाँ के किछ जे ओरिजिनल बचपन के या यहाँ के अर्ली चाइल्डहुड के या गांव के एक बार परिचय हो जाए, तो लोग सबके पता चल जाते हैं कि यहाँ की शुरुआत कत से भेल। आई था बिल्कुल कॉर्पोरेट कनाडा में टॉप में बैसल छी, सरकार से सेहो यहाँ के एडवाइजरी है, टॉप कंपनी से सेहो यहाँ के रिलेशनशिप है। लेकिन लंबा एक सफर हेल है। यू आर ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन टेक्नोक्रेट फ्रॉम मिथिला, वन ऑफ द टॉप स्टार्स ऑफ द मिथिला इकोनॉमी। तो कहियो एक बार कि यहाँ के गांव के की परिस्थिति चला, स्कूलिंग कत भेल, कोनो एनेक्डोट अपन अर्ली चाइल्डहुड सब गांव के याद हो या कि नहीं भैया? श्योर, हम एक्चुअली मिथिला से नेटवर्क रूट्स में जाल चाहे छी, या जे टॉपिक मिथिला के छे, तो आई हैव टू गो लिटिल बिट बैक। तो हमर ग्रेट ग्रैंडफादर चले बिरसायर एक गांव छे छोट सन, जे आई वाज ट्राइंग टू सर्च इट लास्ट नाइट। हम ओकरा गूगल में सर्च क के देखे ले चाहे रहिए। तो बिरसायर एक गांव मधुबनी से नजदीक छे डिस्ट्रिक्ट, ओहिठाम हमर ग्रेट ग्रैंडफादर छला। तो हुनकर आई थिंक हाफ मिडिल एज में जखन रहे तखन ननिहाल चल ब्रह्मरपुर एक गांव छे बिहपुर में। तो हम रूट हमरा याद है कि हमार सबके मूल छे, बड़ा इंटरेस्टिंग छे मिथिला में कि मूल से अहाँ लोकेट क सकै छी। तो सतलखे सतोल हमर मूल छिके, जे हमरा याद है एखन। अब नेक्स्ट जनरेशन आई डोंट नो दे विल रिमेम्बर और नॉट। तो सतलखे मीन सतलखा एक गांव हेते जरूर कतो नजदीक। देन आई सर्च इट एंड फाउंड वही ठाम छे, बिरसायर के नजदीक में छे सतलखा गांव। तो सतलखे सतोल मीन्स हमर रूट वही ठाम हेते। तो वही ठाम से ब्रह्मरपुर आबि गेला। तो ओकर बाद फिर हमर फादर ग्रैंडफादर के डेथ के बाद ही वाज द ओनली सन माय फादर। तो हुनकर आई थिंक 8 साल के एज रहे तखन, एंड ही वाज बोर्न ऑफ 1906। तो हम in the 10th sibling, I am the 10th child. Our eldest brother, Dr. Nishish Jha, a famous sociologist, he was almost like my father's age. The बाबूजी के हमरा जे हिस्ट्री जानल बुझल है, at the age of 8 he was sent to Banaras. Banaras,
टाइम में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहे बिहार के लेल, जखन हम सब जेना यूएस आवे छी, कनाडा आवे छी, तो लोग सब बिहार से बनारस जाए रहे। तो ओहि टाइम में वो गेलथिन, और संस्कृत वाज द बिगेस्ट attraction, स्पेशली मिथिला के लेल। तो ही वॉज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। तो वही हम एक मूवमेंट चले रहे मदन मोहन मालवीय जी के थ्रू एजुकेशन, गांधी जी के पॉलिटिकल चले रहे। तो बनारस से वो काशी विद्यापीठ में गेलथिन, वो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, देवर बैचमेट्स एक्चुअली। तो वही टाइम उनकर मालवीय जी के एक मूवमेंट चले रहे, तो सनातन धर्म कॉलेज खुले लाहौर में। So he used to send the bright scholars, the gold medalists, out of Banaras and send it across the country. And there was a silent movement to establish or re-establish Sanskrit and Hindustan के अपन जो original। तो सनातन धर्म कॉलेज चल गया। तो 1930-37 he was head of Hindi and Sanskrit। तो वही ठाम से I think before partition जखन बहुत झगड़ा वगड़ा शुरू भेले, that then everybody started leaving as the college was burnt and principal was killed। he was somehow उनकर save भए था। फिर उनकर वापस आयल थी। तो एक ग्रुप रहे दरभंगा महाराज के और काशी नरेश के, मैसूर महाराजा के and हरि सिंह के। तो they were supporting financially all the movement, that educational movement। उनका भेंट भेलन दरभंगा महाराज से, एंड ही सेड कि यहाँ शास्त्री जी एठाम चल आओ, किया इम्हर उम्हर भटके छी से, बिहार में आओ, बिहार में संस्कृत के हम यूनिवर्सिटी शुरू करे छी, यू टेक ओवर, बिकम वाइस चांसलर एंड दिस एंड दैट। तो हमारे बाबूजी कहलथिन नहीं, आई वांट एजुकेशन, हम एडमिनिस्ट्रेशन से दूर भागे छी। तो उनकर पढ़ावे के रहे मेन ऑब्जेक्टिव। So then he was asked to join Purnia College। The Purnia College join kelthin। Wait से शुरुआत भेले हमरा सबके, to be very frank, my generation। ओकर बाद किछ दिन बाद फिर विनोदानंद झा मुख्यमंत्री रहे, तो he insisted that you should set up a college in Devghar। Suddenly he found Vishwanath temple and Baidyanath temple as his childhood। So he came to Devghar and set up Devghar College quickly। I'll sum up। तो देवघर में हमर जन्म भेल। तो वही ठाम स्टार्ट केलथिन वो देवघर कॉलेज के, वही ठाम हमर जन्म भेले। And I was the last child, so all brothers were already educated and they were getting into different streams। तो वही ठाम से हमर शुरुआत भेल। एंड जे हमर फैमिली बैकग्राउंड रहे, एक तरफ तो बाबूजी के मतलब रहे किताब से। हमर माँ एलथिन फ्रॉम ए वेरी रिच जमींदार फैमिली, ऑलमोस्ट a small king, and she was coming from a rich background and my from the perspective of materialistic world। हमर बाबूजी एजुकेशन से रहता है, एक कॉम्बिनेशन एमलगमेशन भेले विचार के फैमिली में। फाउंडेशन was more very spiritually enlightened, ambitious family, that we wanted to grow, we wanted to do better things in life। तो घर में हमारे childhood, if I remember, I had शिव जी के रहे बड़का तस्वीर, रामचंद्र की जो फैमिली वाला तस्वीर से हो रहे, एक तरफ लेनिन के रहे, दूसरा तरफ मार्क्स के रहे, फ्रेडरिक एंजल्स के रहे, शिवाजी के रहे। The combination was kind of a foundation for the ambition of the family to keep a balance। और तहिना हमार बचपन ओहिठाम बीतल। तो ओहिठाम हम जीएस विद्यालय रहे, से हम मैट्रिक केलहुँ। फिर हम again that ambition was going to go high, so we selected the best college, St. Xavier's College, Ranchi में रहे। I joined St. Xavier's College, and St. Xavier's College, as you know, एक टाइम के फाउंडेशन बड़ा मजबूत रहे। Most of the IITians and IS and doctors, they came out of either Science College Patna or St. Xavier's। So I was motivated to be a scientist। तो हमारे eldest brother रहते in Bombay University में sociology में, he was a reader and he has a big bungalow in Santa Cruz, which was a big thing for Bombayite।
तो हम डिसाइड केलहुँ कि नार्लिकर और भाभा छै तो I should go to Bombay and become scientist. So motivated went to Bombay. But when I landed Bombay में हम गेलहुँ तो हम देखलहुँ नहीं तो नार्लिकर के पता छै नहीं एकदम भाभा के पता छै. People are very commerce oriented. आ सब स्टूडेंट सब जे भेट है जे लड़का से सब कहे कि बी कॉमर्स कऽ रहल छी तो केओ सीए कऽ रहल अछि. आईएएस में भी केकरो इंटरेस्ट नहीं रहे. I got disillusioned by कि आब केना होइत आगे. एहिठाम तऽ सब सिगरेट पिए छै तऽ नार्लिकर तऽ छेबो नहि करे एहिठाम. Then I decided to go back to engineering. तऽ एहिठाम तऽ IIT के टाइम सब फिनिश भऽ गेल रहे. I immediately got a call from Pilani, ITES Pilani. So I went to Pilani, and Pilani में गेलहुँ तो एहिठाम branch नहि भेटल, and I was keen to do, if you do engineering, mechanical engineering. Then suddenly within 15 days of stay, I met a professor, Dr. Chaudhary, who was a famous electrical engineering professor. He was going as a dean to Pantnagar. So he said कि you should come to Pantnagar if you want to. हम कहलों कि हमारा एक admission बहुत हम भेटल है. So I went to Pantnagar. So I finished my mechanical engineering from Pantnagar and then came to Delhi. As usual, my batchmates got into IIT Delhi, so I was also keen to join. But then I had a great opportunity to get into an Italian energy consulting huge company called Electroconsult. Electroconsult में हमरा बहुत बढ़िया job भेट गेल and very good salary to start with. So I suddenly thought that I must go into job market. So हम join केलहुँ, and that is how I began my career. Wow. तो इलेक्ट्रो कंसल्ट मतलब इटालियन कंपनी. आई जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, पंतनगर कॉलेज. अब पंतनगर कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आईटी में यहाँ किना आबि गेलियै. हाउ डिड यू शिफ्ट टू आईटी एंड एचसीएल? हाउ डिड एचसीएल हैपन? ओकर की कहानी छै? This is a very interesting story which links with entrepreneurship. तो हम जखन ओइठाम इटली वाला काज केलियै तऽ it was the head office was in Milan, so I was setting up in Milan, and then we got some big contract in Nepal, and the company's focus was to get some mega 2,000 3,000 megawatt big project. तो ओहिठाम टेहरी डैम के प्रोजेक्ट रहे बहुत पैघ से. तऽ हमरा पठा देल गेल दिल्ली to work with an Italian boss and look for this big project which was in the pipeline of getting contract. The oitam suddenly it was a kind of almost decided that we will get it. Then Mrs. Gandhi got killed and Russians came. The Russians the Gorbachev ke time mein, he picked up all big projects from India on a rupee payment. ओकर बाद राजीव गांधी के पोजीशन आबि गेलै तऽ Italians were asked to leave because of his wife being an Italian. तऽ ओहि टाइम में I was asked to go back again to head office and do. तऽ हम decide केलहुँ कि no, I have to stay back. And most of my brothers had already migrated overseas in US and Canada and all. हमर mother, I had lost father by then. हमर mother चलथिन very visionary, and she said कि India में यह देश छै जेटा भगवान बसै छथि. It's the country you should not leave. So I was kind of locked in with this thought, and she said कि दुनिया में कतौ भगवान के ने एही ठाम स्थान छै हुनकर. Everything you will get it here. But then I thought that the best way to prosper is to start my own company. Connected with so many people, and the time I decided to start my own company. And there is a very interesting story that because of my Canadian connection, family connection, I knew that the personal computer or something like that, personal computer was still not that popular. Something of that sort. I met some scientist in NIC. तो ओहि ठाम हमरा लागल जे I should start a computer company. And this is then 85, 80, 84, 85 time frame? 85.
डॉक्टर गरोला रहे तो इट NIC में वेरी फेमस एंड ही हैड आल्सो कम टू US, सो आई मेट डॉक्टर गरोला। पूछलो उनका तो ही सेड कि देखो कुछ करना है तो PC बनाओ, तखन पीसीओ नहीं जानी की है PC। With IIT Delhi friends and all that, I came to know the details and all. तो I decided हम सर्च केलहुँ कि कहाँ केना सीखल जाए PC, केना की है छै PC की। I was a mechanical engineer, ओहि टाइम में सॉफ्टवेयर के तो नामो निशान नहीं रहे। तो देन हम सर्च केलहुँ तो एक बिग एड देखलहुँ HCL के, तो रीजनल मैनेजर के जॉब रहे, तो हम अप्लाई केलिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड। आइडिया वाज हम सोचलहुँ कि 1-1.5 साल में पूरा पता कर लेब केना कंपनी बनै छै, केना काज करै छै, PC की है छै, मार्केट की छै। तऽ हमरा एहिठाम शुरू करना छै तऽ एहिठाम पता करब। I joined HCL and so I joined HCL to start my own company to learn about 1.5 years. But एहन बढ़िया HCL के story छै that when I joined HCL, within a year with my success, I mean, I started, हमर फीलिंग भ गेल कि तऽ हमरे अपने कंपनी छै। और एहन एटमॉस्फेयर रहे शिवनाडर के और the group that who started it, that कखनो feel most of the employee never felt कि हुनकर अपन कंपनी नहीं छै। And I started achieving, breaking records in business, biggest size of business and computerization के जे तखन हवा शुरू भेले फेर, तो उस सक्सेस में हमारे अवार्ड भेट गेल, और patting on the back, getting my name circulated all over India. तो वो सब I got lost into building HCL as if it's my own company. हमरा लगे कि वो जो entrepreneur चलकिन है, that entrepreneur was put at the back burner and now that entrepreneur is coming to the front side also. No? Same. Yeah. But you see, the learning is कि एहन leadership रहे HCL के या group के, they had no money, but they knew how to manage people, how to build company, how to manage team. तो ओकरे फलस्वरूप रहे जे हम अपन कंपनी बुझलहुँ HCL के, हमर जतेक एनर्जी रहे that got into this building this company, and that is how I began in IT. बिल्कुल HCL तो एक ऑलमोस्ट फाउंडिंग टीम छे इंडियन IT इंडस्ट्री के, ऑलमोस्ट लीडिंग कंपनी छे। उनकर अपन जे मार्केटिंग या सेल्स के प्रवेश चलेना है बहुत ही शानदार, उनकर अपन मार्केटिंग ब्रांडिंग सेल्स के एक नेटवर्क चलेना है। एंड धीरे धीरे जना की सॉफ्टवेयर में शिफ्ट पहले, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में शिफ्ट पहले, आउटसोर्सिंग में पहले, दे आर स्टार्टेड लीडिंग दैट आल्सो। सो इट्स रियली अ जायंट कंपनी। तो अहाँ तो पूरा सफर दिखलिए, हाउ द IT इंडस्ट्री डेवलप्ड, how the software industry developed, how the US thing developed, and of course आज कनाडा में काम किया। तो एक अगर हाँ के जर्नी के एक स्टेजेस में डिस्क्राइब करो कि है कि केना IT डेवलपमेंट दी भगले कि हम $100 बिलियन के रेवेन्यू पे छी अप्रोक्सीमेटली, तो ओकर अहाँ एक संक्षिप्त में एक स्टोरी बतेबे कि IT रेवोल्यूशन भेले केना, एंड वी विल टॉक लेटर कि ओकर कोनो पैरेलल छे कि मिथिला में भ सके छे, आय के काल में हम केना सोच सके छे एकरा बारे में। देखियो HCL के जे फाउंडेशन रहे दैट मार्केटिंग कंपनी रहे, कैलकुलेटर से शुरू कल के काज 78 में जखन IBM के इंडिया से निकल ले तो दे स्टार्टेड, और 82-83 तक इमेजिन नहीं केने रहे HCL दैट दे विल बिकम सो बिग। बट ओखन जखन 8088 से शुरू भेले, the ambition of the founder was always high. They wanted to be number one always in India, and they wanted to be the leader in that industry. तो ये जो फायर है एंटरप्रेन्योरशिप के, वो फायर रहे HCL में। तो हम सब जखन शुरू केलहुँ तो वही टाइम में कंप्यूटर के हमरा याद है दैट फर्स्ट प्रोजेक्ट जो NIC के इंडिया में भेल रहे, दैट कंप्यूटराइजेशन के जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो NIC के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के शुरुआत भेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, to have a computer to all the DMs. तो जतेक DM रहे इंडिया में, ओकरा पहला प्रोजेक्ट हमरा याद है थे गवर्नमेंट के। I mean of course एक बिग प्रोजेक्ट रहे IBM लेड रेलवेज के सबके, वो सब तो अलग चीज रहे, बट मास स्केल कंप्यूटराइजेशन में NIC के थ्रू HCL शुरू कल के काज।
कंप्यूटर देने का डीएम का और फंडामेंटली यार है कि अगर डीएम के नॉलेज में भ जेते कि कंप्यूटर के की यूटिलिटी थे तो इट विल स्प्रेड। तो वही टाइम से शुरुआत भेले। ओकर बाद हमरा याद है कि 88 में 87 और 88 में यूनिक्स प्रोसेसर स्टार्ट कैल के फर्स्ट टाइम। द इमेजिनेशन ऑफ द फाउंडर्स वेर मोस्टली कि हम सब कोना IBM बन सके, कोना ह्यूलेट पैकर्ड बन सके। तो वो यूनिक्स में हमरा सबके मास्टरी रहे। फर्स्ट यूनिक्स बेस्ड सिस्टम बनेल के ओकर बाद सेकेंड फिर मैग्नम कंप्यूटर रहे जे 6 प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर फर्स्ट टाइम बनेल के और इन हाउस R&D। लेकिन जतक स्पीड से यूनाइटेड स्टेट्स के इमहर के जो स्पीड रहे वी कुडंट कैच अप। सो वी रियलाइज्ड कि लॉन्ग टर्म में नहीं चलते अनलेस देयर इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड इन R&D। तखन एक स्ट्रेटजी शिवनाडर के रहे जे we must grow in a big shape in the computer. So Hewlett Packard के साथ में joint venture भेले, which I was in the helm of affair। फ्रंट में रही तखन हम जनरल मैनेजर स्ट्रेटजी रही। तो Hewlett Packard के साथ joint venture के पर्पस रहे जाए कोई मिनी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर खोल जाए। तो it was a manufacturing joint venture। तो 1991 में 93, 92, 93 में 91 में आई थिंक HP के साथ जॉइंट वेंचर भेले। तो HP taught us हमारा सबके जो पैशन रहे मोस्टली HCL के खाली पैशन रहे, प्रोसेस नहीं जानते रहे। बहुत बदनाम कंपनी रही शुरू में कि सामान बेच देते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं। ओकर कारण रहे दैट वी हैड नो नॉलेज, क्वालिटी के कॉन्सेप्टे नहीं रहे। वी वर ओनली पैशनेट पीपल। और HP के रहे प्रोसेस ओरिएंटेड। दे passion was not important, but process was important. The passion or process ke merging is the foundation that happened in a big way. HP ke joint venture ke baad mein, then we went into mini computers, then we went into selling all kind of the HP ke ela ke baad, the first time I think 90 में 93 में idea आले कि कुछ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी है चे अराउंड हार्डवेयर। तखन कंपनी खाली हार्डवेयर जाने थे। तो एक टा काज वेरे शुरू दैट HP के वजह से दे स्टार्टेड कमिंग टू US फाउंडर्स एंड सीनियर पीपल। तो HP कहल के कि हम सब जो कीबोर्ड है इंडिया में, कीबोर्ड हम सब वर्ल्ड के लेल बनाए। तो इट वाज अ बिग स्टार्टिंग। बट वही टाइम में HP had no idea that यूनिक्स के एतेक एक्सपर्टीज हमरा सब लग छे। तो when they got kind of a joint venture तो ओकरा पता लागले तो they started talking of Unix। तो हमर सब के it got opened the idea, so we started doing some work for a Unix based। तो 93 में then HCL शुरू कल के R&D HCL ओवरसीज लिमिटेड का 93 or around that time 94 and 90 ओकर बाद HCL started picking up some COBOL, some small business। और दिमाग में लेके फिर HCL अमेरिका शुरू कैल जाए। HCL अमेरिका हुआ कीबोर्ड के कॉन्सेप्ट हार्डवेयर बन गई। तो HCL अमेरिका के रहे आइडिया। तो वही ठाम शुरू भेले हार्डवेयर का कि हम सब हार्डवेयर एठम पठाए आ कन्वर्ट भ गेले सॉफ्टवेयर में बाय डूइंग दिस यूनिक्स एंड कोबोल एंड स्मॉल वर्क। तो ओकर बाद उ कंपनी HCL ओवरसीज के HCL कंसल्टिंग बन गेले। HCL कंसल्टिंग से फिर HCL अमेरिका बन गेले, व्हिच इज नाउ HCL टेक्नोलॉजी। 91 के 93 to 96 या जर्नी रहले। एंड एक्सेप्ट TCS कोनो कंपनी नहीं रही इंडिया में जब दे वर एग्रेसिव इन सॉफ्टवेयर। ईयर 2000 में जो Y2K के जो हंगामा भेले तो दैट मेड leapfrog jump फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। और जते कंपनी रही HCL विप्रो सबके खप गेले, मतलब दे ऑल गॉट कंज्यूम्ड इनटू द फियर ऑफ Y2K। तो वही टाइम में HCL became very aggressive and digital technology। HCL America was already born। We had some running business।
तखन हमरा तो बहुत दिन से रहे प्रेशर दैट आई मस्ट स्टार्ट, आई मस्ट गो, बट हम अवॉइड करी रही बिकॉज माय मदर वाज almost 95 that time, and of course she passed away 100 साल कर भेले 2009 में, but before that almost 2005 में I know so sorry 2001 में I was asked to start Canada. तखन हम VP Global Service रही, तो हम फिर Canada शुरू केलो. So that is how I mean I see my journey in HCL. कनाडा के जो यहाँ के रोल रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल. यहाँ के लीडरशिप में 4000 लोग के कंपनी में गए, कनाडा के सब्सिडी नब हो गए, यहाँ सीईओ बन गए. एंड देन यू आर लुकिंग एट द बिजनेस एट अ P&L लेवल परहैप्स. वो जो जर्नी है कि स्टार्टिंग सम न्यू सीड फ्रॉम ऑलमोस्ट नथिंग एंड देन बिल्डिंग इट ओवर, वो एक्सपीरियंस के हिंद रहा के. Yeah, so Canada में तकनो I think TCS आयल रहे छोट सन, they were only TCS again. हम सब एलों ता I was kind of very nervous कि हम इंडियन कंपनी के कोई इमेज अच्छा नहीं रहे कनाडा में. सोचे रहे लोग कि चीप लेबर सप्लायर्स हैं, बट हमारे सबके जो पैशन रहे इनसाइड और टू बिकम द biggest company of the world, that was the ambition starting from India. तो हम सब वो फेस करे रही प्रॉब्लम. तो I started very humble way in addressing the big contracts. जना SAP के इम्प्लीमेंटेशन के 25 मिलियन 30 मिलियन ये सब के, तो हम बॉडी शॉपिंग से ने शुरू का बिग प्रोजेक्ट्स के स्टार्ट करना शुरू के लिए. और IBM और एक सबके रहे बहुत मोनोपोली रहे था. they were kind of price was not important, but if they IBM को ऑर्डर भेट गए तो परचेजर वाज हैप्पी, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. HCL को देंगे तो क्वेश्चन करेगा. तो इट वाज ए बिग स्ट्रगल. लेकिन हम सब हार नहीं मान लो. दैट इज यस छे इंडिया के पावर दैट अगर चैलेंज आवे छे तो क्राइसिस में हम सब बहुत बढ़िया मैनेज करी छी. तो दैट फाउंडेशन लेड अस टू स्टार्ट गेटिंग प्रोजेक्ट्स. एयर कनाडा के प्रोजेक्ट भेट गए, फिर टेलीकॉम के प्रोजेक्ट भेले, बेल कनाडा के भेट गए. That whole thing started growing and Canada became big. And I देखियो तो almost 4000 लोग छे हम that they are Indian working in Canada, almost close to that. Amazing. So after doing such a terrific job एक CEO बन का corporate executive लोग, and then success behind you, हाँ सब छोड़ कर फिर से startup में घुस गए. तो एक entrepreneurship की जो कीड़ा चला पिने जो सपने चला से कि ना शुरू हो गए. And when you become an entrepreneur after being so successful, परिवार में आगे पीछे दोस्त सब कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, you are already coasting, हाँ इतने काज के नीचे यहाँ पार कर लिया अपन कैरियर पूरा. What was the challenge in becoming an entrepreneur again? What was the experience like? दूर है एक ता as you rightly said कि अंदर में तो वो बीज रहवे करे एंटरप्रेन्योरशिप के, जे लेल हम HCL ज्वाइन केलो. फर्क सिर्फ वेले that HCL was my own company, was my feeling. तो जे एंटरप्रेन्योर के जो फायर है से कन्वर्ट भ गेले big scale of HCL. Most of the people HCL में ही नहीं रहे. वो तो रहबे करे. सेकेंड एक पीरियड के बाद है दैट जो कंपनी जखन बहुत पैघ भ जाय छै तो दे लूज लॉट ऑफ देयर ओरिजिनल टेक्सचर, कल्चर, फीलिंग्स, पैशंस. तो एते पैघ भ गेल रहे दैट शिवनाडर बिकेम ऑलमोस्ट लाइक ए not visible. You can't meet him. He became very big. Most of the founding directors had also left. Arjun has left. Yogesh Vaidya had left. So it became a little bit emotional, kind of a stopper that started, who am I? Hum ki kar halaj. But then again, it got ignited. I must know myself. So I joined this company to start. So this is the right time that I must quit and start. लेकिन एक बहुत different period रहे to start. So 2005 then
I requested that I should be leaved, so I was asked not to. लेकिन उतने की emotion नहीं रहे, and most of my, like Arjun was not there, others were not there, and Shiv Nadar was not bothered. I mean, not bothered means he was not even aware what is happening at other level. He was in a different zone. platform. तखन decide केलहुँ, then finally, you know, it was agreed कि yes, I will be allowed to quit. तखन हम इंडिया गेलहुँ वापस, ओहिठाम फिर resignation वगैरह कऽ कऽ, and I came back again to Canada, set up my own. So that was my foundation. So we'll come back. आके जो company है, 2-3 company है, our investment है, we'll come back to that. But since we are talking about the IT itself, हम सब देखे चाहिए, हमरो कंपनी में चाहिए बहुत सारा इंजीनियर सब छथिन, अपन महफिल सब छथिन, and a lot of people have been educated. क्या एजुकेशन के नॉलेज ट्रेडिशन के तो बहुत ट्रेडिशन है अपन होता, लेकिन क्या एक लोकल जॉब इकोटा नहीं चाहिए. सो एवरीबडी इज डिस्प्लेस्ड, एवरीबडी कोनो बॉम्बे में छथिन, बैंगलोर में छथिन, पुणे में छथिन, हैदराबाद में, मतलब लॉट ऑफ IT power is from the Mithila community or Mithil community, including overseas, for example, professionals. Why is it and that कि हम सब ई नॉलेज ट्रेडिशन के आईकेल के जे एक नॉब टा एक मान लीजिए कोविड की वजह से एक हाइब्रिड या रिमोट वर्क के काज भ गेलै है, डू यू सी कि ई पॉसिबिलिटी छै कि ई नॉलेज ट्रेडिशन के यूज क के मिथिला में IT पेनिट्रेशन के इंप्रूव कैल जा सके छै? अगर अहाँ के जर्नी IT जर्नी के ट्रेस क के ई देखा हो कि केना एक रोड मैप बनते कि लो क्वालिटी स्किल अहाँ के लिए हार्डवेयर से शुरू के लिए, अहाँ अपने SAP से शुरू के लिए एक लार्ज प्रोजेक्ट की एक रोड मैप हेते कि मिथिला में हम सब कह सके छै कि मिथिला में लोकल सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट या IT एम्प्लॉयमेंट जे छै 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक पहुंच सके छै. अहाँ के कोनो थॉट है एक ऊपर की आइडिया यहाँ के भ सके छै? फर्स्टली देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अहाँ केने छियै, एंड दैट वाज द फायर दैट हम एक्साइटेड भेलहुँ मिथिला एंजल नेटवर्क के, एंड अहाँ के जे इनिशिएटिव है got attracted. Fundamentally या कि मिथिला में किया न भए सकै छै. तो आई विल टेल यू द स्टोरी. हम जखन HCL में रही तो बिहार में एक कंपनी रही बेल्ट्रॉन, तो हमारा एक बहुत पैघ ऑर्डर भेटे वाला रहे 20 करोड़ के, तखन ऑलमोस्ट 20% रही कंपनी के टर्नओवर, एंड आई वाज यू नो द कंट्री हेड ऑफ सेलिंग मार्केटिंग. तो हम ओहि टाइम हमरा दिमाग में भेल कि why not join a public sector company and bid together to avoid tenders and all. Strategy हम बनेलहुँ, which was perhaps first strategy in India. वही time तो हमरा opportunity रहा कि I could have joined Keltron, Hartron, so many companies electronic. जानते हुए राजीव गांधी के टाइम में इस सब के बहुत support भेटले, and they were growing. Keltron was going very big. हमार जे उ जे रहे इच्छा बिहार के लेल, मैथिल अंदर में तो मैथिले छी, लेकिन बिहार वाज द फ्रंट. तब बिहार में हम कहलहुँ कि व्हाई नॉट टू जॉइन विद बेल्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ हार्ट्रॉन इन हरियाणा. ऑल्दो हम दिल्ली में रही, लेकिन हृदय हमार बिहार में रहे. तो हम गेलहुँ बेल्ट्रॉन के साथ में एग्रीमेंट केलहुँ. हमार आइडिया रहे कि बेल्ट्रॉन के थ्रू तखन शुरू नहीं भेल रहे सॉफ्टवेयर के, लेकिन एक विजन रहे कि बिहार में एतेक सब लड़का सब छे, एतेक इंजीनियर सब छे, और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. आई नो द स्ट्रेंथ ऑफ बिहार एज ए स्टूडेंट, एज ए फैमिली. तो हम सोचलहुँ कि जे व्हाई नॉट टू डू समथिंग इन बिहार थ्रू बेल्ट्रॉन एंड मेक ए JV फॉर HCL, सम काइंड ऑफ ए पार्टनरशिप, नॉट ए इक्विटी JV बट ए पार्टनरशिप, जेमें कि लोकल काज, सपोर्ट के काज, ये सब विच इज इनडायरेक्टली सीड रहे सॉफ्टवेयर के, बट नो क्लियर कॉन्सेप्ट. तब कर लो, एग्रीमेंट भ गेलै. लेकिन प्रॉब्लम यह छै कि विजन के कमी, कि जे ऑफिसर्स रहे, IAS ऑफिसर्स रहे, they had no idea, no vision for Bihar. They were more of a सरकारी ऑफिसर. टैग तो रहे IAS के बिहार के, लेकिन ब्रेन was not that focused. तो उ चलले फिजल आउट भए गेलै, कोनो सपोर्ट भेटल IAS से. ही रिजेक्टेड इट लेटर ऑन कि नहीं, ये तो ये नहीं चलेगा, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है. वेरी निगेटिव थिंकिंग कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है. जना कही छै ना कि अब महीने अहाँ सोचो कि हम तो बिहारी है, हम तो गधे हैं, तो हाउ विल यू इमेजिन? यू मस्ट सी कि यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट.
तखन अहाँ यू कैन बिकम बिग। तो थॉट प्रोसेस में रहे कि नहीं ये तो नहीं होगा, बेल्ट्रोन में कैसे होगा, नहीं होगा, तो वो फिजल आउट भए गेलै। बट दैट वाज अ ग्रेट फाउंडेशन इफ दे वुड हैव यूटिलाइज्ड परहैप्स दैट टाइम। आई एम टॉकिंग 1990, बिहार कुड हैव बिकम अ बिग लीडर इन सॉफ्टवेयर। मतलब ओहि समय में हो सके कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सेहो नहीं रहे, एखन तक खैर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया छै, एयरपोर्ट सेहो छै दरभंगा में, इंटरनेट फैसिलिटी सेहो भ गेलै, लैपटॉप पेनिट्रेशन सेहो भ गेलै, मोबाइल सेहो। आगे की लगैया कि आइ के जमाने में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज सेहो 18-20 टा भ गेलै, लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स आर गेटिंग देयर, जॉब गारंटी कोई छै नहीं रहता। आई के जमाने में अगर हम ITES के पेनिट्रेशन के बात करें कि हाँ मिथिला में, दरभंगा में, मधुबनी में, सहरसा में होक चाहिए यूनिट्स लो कॉस्ट से रहते की रोड मैप रह चाहिए कि केना हम सब पहिना सर्विस या दोसर सर्विस या अपग्रेडेशन धीरे धीरे होकर एक डेवलपर इकोसिस्टम में केना जा सके छी, कोनो अहाँ के ए पर कोनो विचार है? देखियो हमरा एक चीज तो हम डेफिनेटली कहब जे बिहार के जे लड़का है छे, बिहार के जे स्टूडेंट है छे, बहुत हार्ड वर्किंग है छे और बहुत पैशनेट है छे। एम्बिशंस हम देखलो एखनो तक देखे छिए जे देयर इज नो डिग्रेडेशन, एम्बिशंस लेवल बहुत हाई रहे छे यूथ के बिहार में, अनलाइक एनी अदर स्टेट। और दैट कन्वर्ट्स इनटू जखन देखे छिए IIT के टॉपर या IIT के JEE में या IAS में बिहार के, ओकर कारण वह छे। ऑफ कोर्स मिथिला के एडिशनल पॉइंट छे दैट मिथिला गेट्स रिलेटेड टू द ग्रेट स्कॉलर्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड। तो मिथिला रीजन के तो अहू ना हिस्टोरिकली, चाहे मंडन मिश्र कहू, चाहे गार्गी कहू, चाहे विद्यापति कहू, चाहे आर्यभट्ट कहू, तो दे ऑल मिथिला के रूट्स में छे, DNA कतो गेल नहीं छे। So fundamentally talent is very much there, passion, working hard is very much there. दू चार टा प्रॉब्लम छे कि व्हेन यू स्टार्ट एनी IT, एखन देखियो स्टोरी बेंगलोर में ऑलमोस्ट $50 बिलियन एक्सपोर्ट है छे कर्नाटक बेंगलोर से सॉफ्टवेयर सर्विसेज, $50 बिलियन। एखन जो पाछा देखियो तो केना स्टोरी भेले, इट स्टार्टेड विथ आइदर इन्फोसिस और इट स्टार्टेड विथ नॉट इवन IISc, I mean, BIT Sindri was not a less institution. Science College was not a less institution. लेकिन जे स्टार्ट भेले इन्फोसिस के वजह से भेले, विप्रो के वजह से भेले। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर छे, एक तो छे शुरुआत कहूँ ना कैल जाए, और एक छे स्ट्रेटेजिकली हाउ वी कैन टेक ए बिग जंप, यू नो। तो जखन देर कोई बड़ा कंपनी नहीं एते, उठन स्टार्ट नहीं कहते, strategy wise it will be wrong, it will be very slow progress. Either homegrown या तो नारायण मूर्ति पैदा भए जाए ओहिठाम, या शिवनाडर जे ग्रुप जे नॉर्थ में भेले, दिल्ली में भेले। तो एखन देखे छी दिल्ली में HCL is the only company which is the biggest employer and biggest company। तो वो दिल्ली में शुरू भेले, नोएडा में शुरू भेले, तो ओहिठाम बंगलोर में शुरू भेले। तो एक तो ये बहुत बड़ा गैप छे बिहार में कि कोई बिग पैग कंपनी नहीं आबि रहल छे। तो ये जे इंडस्ट्री छे ना, मधुमक्खी के छाता जखन आइ छे, रानी मधुमक्खी जखन आबि गया तो ऑल मधुमक्खी विल कम। तो जखन एक बिग एस्टैब्लिशमेंट अहाँ कह दे तो इट स्टार्ट्स कमिंग, ऑल मधुमक्खी विल स्टार्ट कमिंग एंड देन देयर विल बी अ मधुमक्खी छाता, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन बेंगलोर। तो वो एखन बहुत बड़ा गैप छे बिहार में, विच इज ए पॉलिटिकल डिजास्टर। क्यों पॉलिटिशियन ओना मेहनत नहीं करे छे ना, यू नो, व्हिच वी हर्ड। एखन देखियो अग्रवाल, अनिल अग्रवाल छे, दिस इज द बिगेस्ट, ही इज फ्रॉम बिहार, वेदांत। सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट लॉकर गुजरात गेले। व्हाई नॉट इन बिहार, व्हाई नॉट इन दरभंगा? इट कुड हैव बीन पॉसिबल। सेमीकंडक्टर के सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जे वाटर के रिक्वायरमेंट है। अब मिथिला में एबंडेंट वाटर छे, एबंडेंस ऑफ वाटर छे। तो लॉट ऑफ, आई एम नॉट गोइंग इन अ बिग वे इन दैट, बट फंडामेंटली एक तो ई मेजर स्टेप छे जे मिस भ रहले छे मिथिला के विचार। बट इमे कोनो अहाँ के जे अहाँ एक्सपैट्रिएट छी या बहुत एक्सपैट्रिएट लोग सब छथिन या जे बाहर आबि गेल छथिन, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स, तो कम्युनिटी के सेहो कोनो रोल छे, या वी शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन सम प्राइवेट कंपनी टू गो देयर, या कोनो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेते?
Who will be the spark? अहाँ के की लगे? कम्युनिटी के डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। देखियो जखन यूएस में भेल छै, जेना सिलिकॉन वैली बनले तब इफ ट्रांजिस्टर से शुरू भेले, ह्यूलेट पैकर्ड एले, मोटोरोला एले, दे ऑल बिकेम, बट इट्स नॉट नेसेसरली कि ओहिठाम ही छै। कोलोराडो में नहीं भ रहल छै, न्यूयॉर्क में नहीं भ, न्यूयॉर्क हैज बिकम ए फाइनेंशियल हब, ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज इन न्यूयॉर्क। एकटा ईस्ट में छै तऽ वेस्ट में छै, तऽ सोहो कॉल जा सकै छै दैट वी with expatriate connection or industrialist of Bihar or interested industrialist in Bihar, small scale पे भी शुरू कॉल जा सके छै दरभंगा मिथिला रीजन में, which may not be big to start with, लेकिन ecosystem के build करते, and that will start creating employment and local buzz create होते। तब if option 1 is a big one to come, and option 2 is to start something smaller, go back to Infosys old days when Infosys was started. Can something be started? That is very much possible. वो एक कनेक्शन से कह जा सके छै, एखनो जे स्थिति छै ओहि स्थिति में कह जा सके छै for sure. In addition to that, in addition to that, जे most important aspect छै, अब देखियो एठम फ्लाइट शुरू भ गेल छै दरभंगा में, और ओहि रीजन में रोड्स के हम तो डायरेक्ट नहीं जाने छी केहन हालत छै, बट as long as the infrastructure छै, अब 5G आबि गेलै, सैटेलाइट आबि गेलै, अब जरूरी नहीं छै कि it has to be only fiber optic until, and हम सुनने छी जे Airtel is doing a big way in Bihar, fiber optic आबि जेते। So other than this, the smaller things like roads and other things, it's a very easy thing for community to do. Then you only need the other thing is the education side. Education side में what is the role of startup economy or startup ecosystem in this initiative? मतलब एक तो छै कि big company जे छै, हमरो कंपनी छै, हम सब देख रहल छी कि हम 20-25 लोग के एक टीम बनाकर छोट छीन तो शुरू कर सके छी कि नहीं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज टाइप ऑफ थिंग, और some lower value product testing for example, or documentation for example. लेकिन जे स्टार्टअप इकोनॉमी छै, जे ऑलरेडी हम देख रहल छी कि ऑलरेडी ग्रीन शूट में छै मिथिला में, खास करके मिथिला इंजन नेटवर्क में बहुत सब अभी छथिन कि हम ई काज कर रहल छी, कैन यू हेल्प अस। अहूँ एकटा स्टार्टअप मतलब एकटा शुरू केनौ है, आ 2-3टा स्टार्टअप में फंडिंग सेहो केनौ है। आ स्टार्टअप इकोनॉमी के अहाँ केना देख रहल छी, या खास करके मिथिला के लेल कोन स्टार्टअप, केहन तरह के स्टार्टअप, ओहि में अहाँ के की एक्सपीरियंस है? डेफिनेटली स्टार्टअप के लेल बहुत पैघ जरूरत नहीं छै, लेकिन स्टार्टअप के लेल जे जरूरत छै, जे वो छै the creating that atmosphere and providing the facilities for ambitious young people to imagine bigger, to find the process। तो वो जे मेंटरशिप के जे छै वो बहुत जरूरत पड़ते ओहिठाम, क्या जे स्टार्टअप के माने ये नहीं छै that it has to be only IT. You can do a business of making from entrepreneurship points से जो देखल जाए तो you can even make sanitary napkins, that also can become a big business। तो चाइना का मॉडल देख लियो, चाइना में कोना भा रहल है entrepreneurship, they are, for example हम फॉरेस्ट्री में एग्जांपल देब कि कनाडा से वुड ले छै, लॉग ले छै, वुड कट क के ओकरा इंजीनियरिंग क के आ ओकरा फिर वापस वैल्यू ऐड करके 10 times को क्या पठा दी थी फिर कनाडा वापस। So taking the raw material from here and getting back the consumer in this country again। तो वही टाइप के बिहार में स्टार्टअप शुरू कैल जा सके छे। फॉर एग्जांपल एखन बीपीओ लियो, you can start a small BPO of 25 people, right? You don't have to come to Noida। क्या नोएडा अहाँ एहन करू, स्ट्रेटजी कनेक्ट करू, नेटवर्क करू, जहाँ अहाँ के लिए शुरू मिथिला एंजल नेटवर्क, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इस सब से काज से एकटा 25 लोग के जो एकटा वो लीगल सर्विसेज के कॉलेज के स्टार्टअप, तो वो 25 कैन बिकम 250 कैन बिकम 1000 people, 1000 सीटर।
तो अहिना स्टार्टअप कॉल जा सके छे, तहिना सर्विसेज के छे, एआई से रिलेटेड छे, एग्री टेक से रिलेटेड छे, फिनटेक से रिलेटेड छे, छोट छोट सन काज शुरू कल जा सके छे, ओइठाम एखनो कल जा सके छे. It requires the environment, creative people to join the डेफिनेटली movement. यहाँ के तो ऑलरेडी बहुत मतलब रेपुटेशन रीच से हो है यहाँ के अतुल जी के आईटी टास्क फोर्स में से हो, यहाँ के एडवाइजरी कैपेसिटी चला, शीला जी के दिल्ली के से हो चला. यहाँ के कोनो अप्रोच आयल छे कि बिहार से या बिहार गवर्नमेंट से कि यहाँ हमरा हेल्प करू, वुड यू बी एबल टू हेल्प कि यहाँ के लगे कि केना अहाँ सब ओइ में इन्वॉल्व होकर किछ एकटा डायरेक्शन या रोड मैप बना सके छी कि एना बीपीओ हेते या एना सर्विसेज हेते या एना स्टार्टअप इकोनॉमी हेते, एकटा स्ट्रेटेजिक रोड मैप बन जेते. नहीं, एकरा में तो डेफिनेटली बहुत ढिलाई छे फ्रॉम द साइड ऑफ द पॉलिसी मेकर्स. ओइठामक जे incentives छे, those are very confusing incentives. और ओकर जे एनवायरनमेंट छे कमी छे कि जे लोग सब जे अप्लाई करे छे. अरविंद जी, प्रॉब्लम इन बिहार इज दैट सब कहूँ ना चाहे छे हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी एंड मेक सम मनी एंड बिकम, बड़ा नैरो थिंकिंग भ जाए छे बहुत मेजॉरिटी के. एक्सेप्शन छे, लेकिन अगर स्टार्टअप में अगर 10 लाख के दऽ रहल अछि तऽ उ पहले विचार छै कि 10 लाख का कैसे जुगाड़ कर लिया जाए, 10 लाख कैसे निकाल लिया जाए बिहार गवर्नमेंट से. ओकरा में ऑफिसरों सब इंडल्ज रहे छे, उसमें से 2 लाख अपना कैसे निकाल लिया जाए. I'm not criticizing, but I'm telling you that thinking is to a short-term gain has made too many losses in Bihar, in many projects, in many things. So we have to create, we have to undo that. We have to guide young people to think big and, invest money. If 10 lakh Bihar government is there, they should sell their own house and invest 5 lakh in that. E type के attitude की जरूरत छे. अखन ओइठाम के startup can become a successful enterprise for future. तो हम सब जे मिथिला एंजल नेटवर्क शुरू केने रहिए, बहुत सब हमर संगी सब छे ऑलरेडी यंग एकटा प्रोफेशनल सब छे. आइडिया सह चले, लेकिन हमरो सब के लग रहले कि देयर इज अ लिटिल गैप कि जे एक्सपैट्रिएट प्रोफेशनल छथिन, एकटा ट्रस्ट गैप छे या एकटा मे बी मैच्योरिटी गैप छे. एखन तक वो सब हमरा संगे वो कनेक्ट में नहीं आबि रहल छथिन कि हम सब एकटा रियल इंपैक्ट कर सके छी. तो मिथिला एंजल नेटवर्क के लिए अहाँ के की गाइडेंस है कि हम सब हमरा की करे चाहिए कि जे अपन एकटा नेटवर्क हम सब बना सके छी 500,000 2000 लोग के, जे कि स्टार्टअप के या आईटी सर्विसेज के या आईटी इनेबलमेंट के जो हम इसके इनिशिएटिव होता ओहि में सपोर्ट कर सके, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट या मेंटरिंग सपोर्ट या सोशल कैपिटल सपोर्ट या मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, कोनो तरह से स्टार्टअप के हम हेल्प कर सके छी. अहाँ के की विचार है कि मिथिला एंजल नेटवर्क के की करे चाहिए? जेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट जे हम देखने छियै जे स्टार्टअप के जे प्रॉब्लम है छै, इवेंचुअली दू चीज है छै. एक तो जे मैनेजमेंट के जे टीम है छै, टीम के इनएक्सपीरियंस स्किल्स द कंपनी. एक तो मेंटरशिप बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट छे. सेकंड एंड आई थिंक द प्रायोरिटी मोस्ट इज द फंड पार्ट. इफ यू डोंट हैव फंड देन यू कांट ग्रो. और स्टार्टअप के एक फेज आवे छे जे शुरू तो क दे छे, लेकिन फिर बीच वाला जे फेज है छे वही फेज में या तो बंद हो जाए छे या फिर ग्रो नहीं कर सके छे. तो वही टाइम में जे फंड के मस्ट छे. एंड दैट इज हाउ यू विल सी कि सिलिकॉन वैली किया कहे छे या कैलिफोर्निया में के, बिकॉज वही टाइम कॉफी टेबल पर डिस्कशन है छे, टिश्यू पेपर पर डिस्कशन है छे के ओके हियर इज द चेक $1 million next week you will have it. Because there are multiple millionaires sitting with a small $1 million easily. Now I'm not talking of the big ones, but who environment बिहार मिथिला में कहाँ छे, आइडिया सब छे, लड़का सब के जोश छे, लेकिन so we have to build that. And I think Mithila Angel Network can go to Australia, go to United States, go to Canada, go to UK. और जागतिक मिथिला के जे छोट छोट सन जना अपन एकटा व्हाट आई शुड से द जना एकटा ब्रांच ऑफिस जका है छे, एकटा छोट सन एकटा some coordinator, some person must join, and then we should have a very clear program
कि हम फंड के की साइज रखब आ फंड के की ऑब्जेक्टिव रखब, कौन एरिया में रखब, ओकर बाद ओकर कलेक्ट कल जाए ओहि ढंग से। And then even if you have say $10 million, you know, छोट फंड $50,000 के या $1,00,000 के मैक्सिमम फंडिंग प्रोग्राम कऽ कर 10टा जो शुरू कऽ देल जाए, 10टा में से 3टा सक्सेस भेटले, तो that itself will become work like a catalyst. Very nice. And that is how it has happened everywhere. बंगलोर में तहिना शुरू भेले। एक तब दोनों दोसर स्टोरी जो मधुमक्खी छाता वाला कहलहुँ वो बहुत बड़ा फैक्टर छै बेंगलोर के और कतो कैलिफोर्निया के, लेकिन दोसर जे एस्पेक्ट छै सेहो छै स्टोरी दैट स्टार्ट स्मॉल बट कंटिन्यूटी। तो बहुत पोटेंशियल छै, एकरा कयल जा सकै छै। देखियो मिथिला के टुडे यू हैव गॉट डिजिटल वर्ल्ड, you can connect easily, you have data available, मैथिल कतऽ छै, कौन सब बिजनेस में छै, how did you get connect with me, how I came to know about you, तऽ ई बहुत आसान छै, किया ने कयल जा सकै छै, can do a wonderful job। नहीं थैंक यू। मतलब बहुत बढ़िया गप भर रहा है यहाँ सब, मतलब हम सब जाए कि एक आध घंटा बात कर सके छी एकरा ऊपर, बट टाइम के सेहो लिमिट छै। आई वांट टू स्टॉप एंड सी कि कोनो Q&A ल सके छी, कोनो प्रश्न छन। 10-12 लोग सब छै जे देख रहल छै, और फेसबुक पर सेहो लाइव चल रहल छै। लेट अस स्पेंड 10 मिनट्स कि वी कैन डू सम Q&A। अर्पित। थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग। I'm totally mesmerized with this journey. Thank you. जे हमारा एगो क्वेश्चन ई छलै कि लेट्स से एम्बिशन फाइनलाइज भ गेल छै, विजन फाइनलाइज भ गेल छै, लेकिन जे एगो गैप छै कि मेन ऑफ वर्क फोर्स, लेट्स से कई बेर क्या ठाम ई भ जाय छै कि कंपनी के लेट्स से हमरा 10 वर्कर्स चाहिए। एगो दोस्त का हम जिक्र करब, तकरा से 20 वर्क फोर्स चाहे छले कोनो सोलर कंपनी में, बट वो 20 वर्क फोर्स जे छले से रेडी नहीं छले वर्क के कंडीशन में, और ओते प्रिपेयर नहीं छले कि वो डायरेक्टली वो कंपनी में इंट्रोड्यूस कऽ ओकरा से काम करवा सके। हालांकि वो 10 दिन 20 दिन के ट्रेनिंग में वो बंदा तैयार भ जाए, लेकिन कंपनी ई चीज खर्च करे लेल तैयार नहीं छै कि हम ककरो हायर करिए पहले और फिर ओकरा किछ तैयार करिए देन हायर करिए। तो वो जे गैप छै, तो वो एक कम्युनिटी लेवल पर केना पूरा भ सकै छै कि सो दैट कि एटलीस्ट जो वर्कफोर्स है वो रेडी सिचुएशन में रहे, और नहीं कंप्लीट रेडी तो एटलीस्ट पार्शियल रेडी में रहे, सो दैट कि लिटिल बिट ट्रेनिंग से वो काम स्टार्ट भ सकै छै। देखियो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भ सकै छै जे नहीं कऽ रहल अछि हमर सबके संस्था, हमर सबके सोसाइटी। देखियो कनाडा सब में छै कम्युनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बहुत रहे छै, कम्युनिटी कॉलेज रहे छै, जेकरा में छोट छोट सब कॉलेज सब छै। They are producing a great programmer, they are producing a great skilled people in other areas, medical health या टेली हेल्थ या हर 1000 तरह के ट्रेड छै जेकरा में करे छै वो इमीडिएटली। तो उ देखियो बिहार में छले बहुत पहले पॉलिटेक्निक वाला कॉन्सेप्ट रहे विच इज गॉट डिस्ट्रॉयड। तो उ जो शुरू नहीं करते कम्युनिटी कॉलेज तो फंडामेंटली शिक्षा नहीं भेटते। बट जे गैप रहे छै स्किल के प्रोग्राम कऽ जा सके छै फॉर गवर्नमेंट, जे एतेक जे खर्चा करे छै ओ सब 1 करोड़ 10 करोड़ के, दे कैन डू अ सर्टेन प्रोग्राम कि 10टा ब्राइट स्टूडेंट के जे ओकर जे सैलरी छै, सपोज HCL में दे कैन से कि 50% ऑफ देयर सैलरी विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। एकन प्रोग्राम चला सके छै। एठम छै कनाडा में that $10,000 I employ, 5,000 comes from government, so I have to spend। तो हम 5,000 जो ओकरा सैलरी देबे वाटरलू यूनिवर्सिटी के फाइनल स्टूडेंट का, 5 is good enough for him to earn just 10, but 5,000 में हमरा 2500 लागत, 25 तो सरकार दे छै। ई जो प्रोग्राम करते तो बहुत सब कंपनी will employ these youngsters, will take risk of employing them। आ उ जो 6 महीना काज केल के तो उ ट्रेन भ जाए, and he will be good enough whether he is in data science or whether he is in the solar fitment work, yeah, Samsung, that you will suddenly create a good skill force which will be ready to get employed anywhere, you know। ये program बनाल जा सके छै, and that can accelerate hugely a skilled worker, which usually is a big gap in India, not only in Mithila।
बिल्कुल निशिष जी, आज एक और बिल्कुल हम कनेक्ट कर रहल हमरो कंपनी में, हमरो बिल्कुल साथ में बहुत सारा कोऑप प्रोग्राम्स, कोऑप स्टूडेंट सबका हायर करे छिए। और बल्कि डेफिनेटली ई बहुत अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे तो ये बहुत इनकरेजिंग स्टेप्स, और डेफिनेटली एक रेडी वर्कफोर्स रेडी प्रोग्राम हो सके। और दोसर जे कोऑप वाला कम्युनिटी कॉलेज वाला प्रोग्राम कहली, आई डोंट नो, छोटे छोटे प्रोग्राम सब चलत रहे गवर्नमेंट में कि एक्सेल सिखा दो, ये सिखा दो, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम सब शायद दरभंगा मधुबनी में, लेकिन उनमें स्किल्ड बहुत ज्यादा और बल्क में नहीं तैयार बढ़, जस्ट एक एडमिशन ल ले छे बच्चा सब होते, आई डोंट नो इंटरेस्ट नहीं छे होता, मतलब वो वो इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं रहे हैं, सो दैट कि बच्चा तैयार नहीं बढ़ की बढ़, जस्ट हम देखे छे कि क्या गो से बच्चा से कनेक्ट कर छे, हाँ ओइमे एडमिशन ल लेलके कंप्यूटर पढ़ेगा, एक्सेल पढ़ेगा, लेकिन दे डोंट मतलब क्वालिटी स्टूडेंट या क्वालिटी तैयार नहीं भऽ रहल है। देखियो एटीट्यूड के प्रॉब्लम छै, ओहिठाम सर्टिफिकेट के जोगाड़ में रहे छै, सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहे छै कि सर्टिफिकेट हो जाएगा तो जॉब मिल जाएगा। एखन हम एखन एम्प्लॉय केने रहिए अपन कंपनी बहुत पहिने, तो बिहार के हमारी इच्छा रहे कि बिहार को जॉब दिया जाए, तो ओकरा कहलिए कि तुमको ये लाओ, तो वो कहलक हमरा कि कौन सर्टिफिकेट चाहिए सर, हम ला देंगे। तो he was thinking that certificate makes his entry into companies. So certificate or the जतेक training college से सब छै ने, they are all just producing a certificate only. They are not really transferring the skills. They are not doing that, yes. आर कोनो प्रश्न, मतलब जो ऑडियंस छथिन, ऑडियंस में से कोनो प्रश्न छन त प्लीज अहाँ बाइट सके छी, अहाँ टाइप कर सके छी, दुनू हम सब ल लेब। आई थिंक एक क्वेश्चन कार्तिक कुमार साइड से शायद, यू कैन टेक इट चैट में। हाँ पढ़ लियो। How you see our engineering college students from Bihar? I mean, I believe current situation. सर्टिफिकेट जगह छै, इट्स नॉट स्किल ओरिएंटेड बट इट इज मोस्टली द कंप्लायंस ओरिएंटेड एकटा छै, ओकरा सॉल्व करे के प्रॉब्लम छै। मतलब प्रभात जी ऑलरेडी ट्राई कर रहल छथिन कि ओ जे मटेरियल छै ओकरा एकटा फिनिशिंग स्कूल द के एकटा रियल टेस्ट क के या इंटरव्यू रेडी बना के केना एम्प्लॉयमेंट रेडी बना जा सकल छै। तो प्रभात के अपन एकटा प्रोग्राम छै, स्टार्टअप छै। एनी अदर कोनो दोसर क्वेश्चन? नहीं तो हम सब एक आध और एरिया चले जे हम आई कैन टॉक टू। आके ये एआई वाला स्टार्टअप, अपन जे स्टार्टअप है जे इकन रिसेंटली बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एआई के अवार्ड हुनका भेटलन एल्गो 8 के, ओकर शुरुआत केना भेलै यहाँ के? हाउ डू यू गेट इनटू द एआई साइड ऑफ थिंग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एआई स्पेशली? Yes. हम एक्चुअली आई हैव सीन आके मैकेनिकल इंजीनियर से हो इकन जिंदा है के नहीं, आईटी के असल में हम आई हैव सीन कि जेना स्टार्ट भेले इंडिया में कि हार्डवेयर बनले, फिर नेटवर्किंग भेले, फिर सॉफ्टवेयर बनले, फिर सिस्टम इंटीग्रेशन एले, फिर सैटेलाइट एले, यू नो, फिर टेलीकॉम के प्लेटफॉर्म भेटले। सो then I thought that a huge data has been created all over, and what is the next digital transformation is also happening. So what will be the next? So हमारे मन में very clearly I could see that AI is going to be the next, which will really utilize the mega data available all over the world. तो हम कहो कि why not at this age, which is very difficult, कि हम entrepreneurship एज में शुरू कर रहल छी, जखन हम business class में travel करै छी, my company will not have money to even pay for a flight. So how do I? So I picked up these two, you know, young people from IIT Kanpur. Our हम एक team शुरू केलहुँ, and I said that AI is the thing that you should start. That vision was very clear. The AI शुरू के लिए, because we wanted to do it with purpose. The वो सब chemical engineer रहे, background में रहे, so we started doing something in the process oil and gas industry. So which again became into a predictive maintenance, and predictive maintenance led to a going into the manufacturing base where critical equipments are very important. जो shutdown केलहुँ एक दिन के लेल तऽ अहाँके कई करोड़ के नुकसान भऽ सकै छै, only in one day shutdown. The predictive maintenance really took the space for AI rather than human interface. 4 घंटा लगावे रहे लैब टेस्ट करके आवे कि नहीं इसको रोक दो मशीन को, ऑनलाइन भेट गेले, तो you saved that, you know, disaster to happen. The AI में then I saw India के जे SME छे, they're highly neglected. I thought India is a good kitchen and this can take to the world. Okay? You can do a lot of kitchen work in India and supply to the world. तखन शुरू भेले
Manufacturing is one area that we are very serious. Then oil and gas and process industry is another area. And we have just got into shortlisted in Total Energy in France, which is for their heat exchanger, shutdown je bho jay chhe oकर predictive maintenance ke hum sab kaaj shuru kene chi. So sky is the limit for AI. We are talking of ekhan dekhiyo India $230 billion ke export kare chhe software ke. And $50 billion is in house, but it is going to be $350 billion export of software services from India. Where will you get all these people? The India base rakhna bahut zaruri chhe, although our goal is rest of the world. Ranjit, aage ekta prashn hai ta ha puch liyo, if you can come on the camera, Ranjit. Ranjit ji, म्यूट पे छे कि अच्छा मे बी पढ़ देची he said कि not allowed. How to promote entrepreneurship as a career acceptance in Mithila. मतलब मिथिला में जो एक नौकरी के वो भाग लिया कि सबको सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहल छे कि सरकारी नौकरी कोनो तब भेट जाए हमरा 8-8 साल 10 साल मेहनत क पाई सब खर्च क ट्रेनिंग करा क कोनो तरह से सरकारी नौकरी भेट जाए ओकरा अगेंस्ट एक एंटरप्रेन्योरशिप के कैरियर के केना कल्चर एस्टैब्लिश भ सके छे पूछ रहल छथिन. देखियो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन छे बिहार के लेल. आवर गार्जियंस आर रियली मेजर रोड ब्लॉक आर आप बहुत सब शैटर्ड टूट रहल छे. फॉर एग्जांपल डाउरी सिस्टम व्हिच यूज्ड टू बी द कॉज कि लड़का इंजीनियर ने भेटत त ओकरा डाउरी ने भेटत बढ़िया, तो दैट वाज अ पेरेंट लेड. बट आप जे एखन जे सोशल मीडिया या सब भेल छे, आई थिंक द यंग पीपल आर वेरी मच अवेयर. It requires a lot of ignition work to be done by people like you and me, who can have program, who can have a session, who can have a conference locally in Darbhanga or in Patna or in engineering institutions. खास करके VIT Sindri चल जियो, Sanjeev चल जियो, science college. Then such of these things they want to do, but they are misguided. They don't have a clear path कहाँ जाएं क्या करें. The communication is very important. That is the fundamental attitudinal change. तो बिहार में attitudinal change करवा के बहुत जरूरी छे. फंडामेंटली रहे जना मैथिल सब में ब्राह्मण रहे तो सोचे अरे ब्राह्मण बिजनेस कैसे करेगा, ये कैसे हो सकता है, ब्राह्मण का काम है पढ़ाना. तो ये फंडामेंटल है. अरे ये जाति प्रथा पर जो लोग सोच रहे ये नाई है तो ये नाई का ही काम करेगा. That wall has to be broken yes, aggressively and have to be proven that no, that's not truth. कल जाए तो बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप के जो देखल जाए, सीता के नगरी छे जहाँ सीता रहथिन जनकपुरी में. Entire Ramayana story is, when I see, I think it is around Sita, more than Ram. Yes. वो नगरी जनक के हमार women के upliftment के हम की प्रोग्राम कर रहे जगन 50% population, young population are girls. How we can promote the entrepreneurship among women, among girls? Tremendous potential in Mithila, in DNA. I have seen Mithila ladies are no less than Gujarat ladies in entrepreneurship, but they have to, that shield of husband has to be broken. एकटा आर प्रश्न लाले छी. दीपक अहाँ के प्रश्न छले. अर्पित अहाँ उनका अनम्यूट कर देबे. I don't know, let me try. हम कर सके छी शायद. हाँ अहाँ ट्राई कर लियो, शायद प्रभात जी कह सके छ दिया. भ गेल. हाँ जी. नमस्कार निशिश जी, बहुत नीक लागल. हम पूरा सुनि रहल छलहुँ अहाँके. हमर नाम दीपक मिश्रा छल. हम सैन फ्रांसिस्को में छी. हमरा नीक लागल अहाँ AI वाला कहलिए. तो हम एक्चुअली गूगल में टेंसरफ्लो टीम में काज करै छी. तो AI के एक्चुअली बहुत हद तक फ्रेमवर्क बिल्डिंग में हमरा सबके योगदान होइ छै. हमरा एकटा जे क्वेश्चन छल, एंड दैट इज आल्सो अ लिटिल बिट कनेक्टेड विथ द लास्ट टॉक एंड वंडरफुल टॉक्स बीइंग arranged on this. So that is more on the funding aspect. हमरा की लगे जखन हम जना पिछलो टॉक सुनने रहिए ना, ओइमे की छै जे
इन जनरल बिहार में हमरा लगे जे स्टार्टअप का फंडिंग एस्पेक्ट अपना सब चाहे तो डेट फंडिंग के पाछा जाय छै। आई थिंक मनीष जी या कियो छलखिन जे पिछला बेर जे बतेने रहथिन जे केना लोग बैंक का अप्रोच करे छै, एंड बैंक हैज अ वे ऑफ लाइक फिगरिंग आउट कि अच्छा बाहर से एलो हां फंडिंग करे ले त अहाँ मतलब एत से भागै ले चाहि रहल छी कि किछ एकटा शॉर्ट टर्म टाइप के थिंकिंग होय छै। या फिर दोसर जे एस्पेक्ट अहाँ टच केलिए विच इज अ ग्रांट बेस्ड फंडिंग, राइट? सो ग्रांट बेस्ड फंडिंग आल्सो हैज अ लिमिटेशन एज यू सेड कि पीपल आर लाइक the government agencies also thinks कि भाई 10 लाख के फंडिंग करी तो हमरा 2 लाख के ना अहाँ दऽ दिए तो ऑब्वियसली अहाँ के सीधे बहुत भऽ गेलै। हम बेसी इक्विटी बेस्ड फंडिंग के थॉट प्रोसेस नहीं सुनै छियै, जतेक लोग से हमरा इंटरेक्शन होइया कि नो वन इज थिंकिंग ऑफ कि hey I don't need government's fund, I don't need probably bureaucrats also, right? Why can't I build a equity based funding from day one? अपना सब बार बार इन्फोसिस के एग्जांपल लै छियै, बट इन्फोसिस के एग्जांपल में एकटा चीज अपना सब मिस कर दै छियै, इन्फोसिस वाज ऑलवेज इक्विटी बेस्ड कंपनी, राइट? दे हैड अ वेरी क्लियर विजन, 10-12 साल में उसने किया, एंड इन्फोसिस के ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़का हिस्सा ओई चीज के छै। आई जस्ट वांटेड टू नो बिकॉज़ आई एम श्योर कि अहाँ के ओहन टाइप के एक्सपीरियंस हेबे करत। आई जस्ट वांटेड टू हियर योर थॉट। Am I reading, first of all, am I reading situation correctly? And if yes, then like Absolutely, you're absolutely right. The growth say for any startup or any IT or any entrepreneurship to happen in Bihar and Mithila, which is our topic, it should not be at all government, funded or kind of a attention to get some government fund. It has to be equity based because it. हम तो देखे छिए ना, I have funded, every bit of stage you need fund, growth fund, you need Series A, you need Series B. The government के खाली environment बनावे के चाहिए. The government can play a role of creating the fundamental skill, attitude, conference, seminar, or such program. But fund has to be equity based. So जो मिथिला के जो entrepreneurship के start करवे, तो जब तक कि private funds के नहीं थे, equity नहीं थे, तखन तक it can't go big. और हम देख रहे छी कनाडा में भी यह छै that young people run to Silicon Valley, run to US because they get funds from individual millionaires easily. दीपक धीरे धीरे भऽ रहल छै। तऽ जे हनुमान एम्बुलेंस हमर सबके एकटा पोर्टफोलियो कंपनी छथिन, हम हुनकर एखन ऑलमोस्ट $600,000 के इक्विटी फंडिंग भेल छलनि हैं अबाउट 3 months ago 4 months ago। तऽ ओ एकटा प्रोसेस शुरू भऽ रहल छै, लेकिन आई वुड से कि वेरी अर्ली स्टेज छै। एखन हम सब ठेहुना पे चल रहल छी कोनो तरह से कि धीरे धीरे हेतै। आई थिंक जेना कहलखिन सर कि एक बार एकटा क्वीन भी हेतै ने, एकटा आइकॉन भऽ जेतै कि दिस इज वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप, तऽ एकटा इक्विटी फंडिंग के सेहो साइकिल शुरू भऽ जेतै, खासकर मिथिला के लिए। एखन जे हम सब जाइ छियै लार्जर फंड के लिए, इमीडिएटली कहै छै कि पैन इंडिया एकटा अहाँ हमरा कहू। हम सब कहै छै ने 4 crore तऽ हमर लोकल पॉपुलेशन है, व्हाई डू यू नीड टू गो टू पैन इंडिया? पहिने हम ओतऽ पहिने कऽ लिअ, ओकरा बाद देखबै ने पैन इंडिया। बट हुनका मन में छनि कि पैन इंडिया हेतै तऽ देन वी कैन गो टू यूनिकॉर्न स्टेटस इमीडिएटली। हमरा लगैए कि यूनिकॉर्न नहीं चाहिए हमरा, तऽ मतलब 5 million 10 million के रेवेन्यू भऽ जेतै सेहो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भऽ जेतै। फिलहाल एकटा आर छलै, विजय जी अहाँ के प्रश्न छलै, कोनो पूछ लियौ अहाँ। म्यूट अनम्यूट कऽ देलौ। हाँ जी थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू आस्क। हमर एकटा प्रश्न की रादर हमरा हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। हम पिछला 22 साल से जेट एयरवेज से जुड़ल छी एंड आई वाज सीनियर इंजीनियर देयर। और एक्चुअली काज केला के बाद जे छै से हमरा जेना अपने एखन एआई टेक्नोलॉजी पर गप केलिए, तो चूंकि बीइंग एरोनॉटिकल इंजीनियर हमरा अखन ट्राई कर रहल छी जे एआई के आबे। हमर एकटा कंसेप्ट छलिए, अमूमन अहाँ सबके नहीं पता चले है बीइंग ए पैसेंजर कि एकटा इंजीनियर की भऽ रहल छै। जेना थंडर स्ट्राइक भऽ गेलै या हैवी लैंडिंग भऽ जाइ छै, अहाँ सब एतबा चीज हमरा सब इंस्पेक्शन करे में वो जतेक समय लगे छै, वो समय बहुत ज्यादा लगे छै। तो हमरा दिमाग में जहन ड्रोन के कंसेप्ट, ड्रोन से सेहो जुड़ल हम बेस जे ड्रोन होइ छै, ओकरा जे ड्रोन के सारा चीज हम ओकरा में इक्विप करिए और एआई के सबटा चीज हम बता सकै छी थ्योरेटिकली, बट हाउ इट कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड इट कैन बी मेड दैट आई डोंट नो। एहि लेल हम बहुत दिल्लियों में सब केलहुँ, बहुत सब गपशप गेलहुँ और बहुत तरह के एक्सपीरियंस आयल। पहले सवाल जे अहाँ कते पाई लगेबै एहिमे, आई रे बा
नौकरी हारा आदमी कतेक पाई लगा सकै छी, हम अपन कंसेप्ट दऽ सकै छी, थ्योरेटिकल जे हमरा ई सबटा हम लिख कऽ दऽ सकै छी, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन चाहिए हमरा और अपना आइडियाज चाहिए केना एकरा फॉर्मुलेट कऽ सकै छी, सो दैट एयरलाइंस एखन तक इंडिया में ककरो पास एहन नहीं छनि ड्रोन के कंसेप्ट लऽ कऽ जे ड्रोन से इंस्पेक्शन करैत और टाइम के सेव कऽ सकै। तऽ एहि लए एखन पिछला 1-2 महीना से घूमि रहल छी, डिफरेंट ऑपरेटरों से बात सब भेल, कहला जे नहीं यहाँ के टेस्टिंग के लिए हम जहाज तो दऽ सकै छी, because you are a self as an engineer of aircraft, you know what kind of safety is going to be taken. तो ई हमरा कतौ से हेल्प भेटा अगर एहि मंच पर एहि दुआरे अपने सब छियै तऽ जानकार, I will be really privileged to have such kind of thing. Sure. Should I answer this? जी निशिश जी। Definitely idea कते कहाँ के एज अछि विजय बाबू? How old you are, Vijay Babu? Hello. I think he's closer to 45 plus. So usually, Okay. 20-22 साल he worked for. Oh, good. I think Arvind ji is a great connector for you, and I can definitely listen to your ideas and read your ideas. Let us share that. I mean, हम सब जना एक innovation lab शुरू करने चाहिए IIT कानपुर में, where we are picking up from idea and motivating the freshers to join rather than joining Goldman Sachs. We are saying that you should join this company as an equity partner and give a try for 2 years. If you fail, then you can still get a job outside. So few things have started. एक ता ड्रोन के कंपनी छे, सो शुरू भेल छे ओठाम IIT कानपुर में। तो हम सब वो जे हब शुरू केने छिए, innovation lab. There are many other places also, but you should connect with this group, some group like that, जहाँ idea का अहाँ convert कर दे एक ता shape में, in a business shape, and then you can start with the initial small money, and then pilot project, and if it succeeds, then that is how second phase somebody will be interested to put more money, and then you can have a more commercial rollout, and then you can go for another big size money, and then you can become a big company. So that is how it starts. So the idea has to convert into a commercial model. हम इनका यहाँ से कनेक्ट करा दे निशिश जी। आई थिंक हम ऑलरेडी 20 मिनट ऊपर भाग लो, हम सब 1 घंटा के टाइम लेने चलो यहाँ से, बट आके मतलब आके इतने नॉलेज है एरिया में, इतने फ्लोइंग कन्वर्सेशन चलिए जे एक भूतिया के लिए हम सब कि वी वेंट इनटू द बाउल्स ऑफ केना आईटी डेवलपमेंट भेले। दिस इज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड शेयरिंग ऑल योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। आई एम आल्सो थैंकफुल। और हम तो मैथिली में जे पहली बेर कोनो वेबिनार कर रहल छी जे हम मैथिली में बात के समटाइम आई स्विच टू इंग्लिश, लेकिन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव अरविंद जी, एंड आई विल हैव अ फुल सपोर्ट for you to get the big question that how more fund can be raised to pump in back to Mithila region and create more entrepreneur. I mean, you have people from Google. Ground pe kaaj kar rahe chi, we will come to you at the right time with some good projects. Yes. So let's see. We'll always need your support, sir. Absolutely, always it will be there. Thank you so much. Pranam. Thank you. Thank you so much everyone for joining. Bye. Thank you. Bye.